हेलो दोस्तों एंड व्यूवर्स, सेल्पिप एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेल्पिप स्पीकिंग टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज। चलिए देखते हैं। पहला टिप एंड स्ट्रैटेजी जो है उसमें आपको गिविंग एडवाइस में डायरेक्टली स्पीक करना होगा आपके दोस्त के साथ या आपके रिलेटिव के साथ। Speak directly to the friend or relative. Tip number 2, provide at least 3 suggestions by giving one example or maybe an advice, or even you can suggest something by saying, my suggestion to you is use different conjunctions, but, because, whereas, nevertheless, however. Tip number 5, signal each new suggestion with a transition word or phrase such as, if I were you. Another thing you could do is, one final thing is, so ऐसे आप बात करेंगे आराम से आपको CLB 9 या 10 भी मिल सकता है। Tip number 6, use a helpful and thoughtful tone by using modulation. चलिए, टॉकिंग अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि सेल्पिप स्पीकिंग का दूसरा सबसेक्शन है। इसमें टिप नंबर 1 हो गया आपका, क्विकली डिसाइड व्हाट स्टोरी यू विल टेल। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आपके जिंदगी में जो भी चैलेंजेस थे उसको आपने कैसे ओवरकम किए, तो फिर ओवरकमिंग ए चैलेंज इन लाइफ। सो वो हो गया आपका टॉकिंग अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस। Tip number 2, if you can't think of a real experience from your life, make one up, that is, fake it up. Tip number 3, use past tenses, never use present tense, क्योंकि आप जो बीत गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। Tip number 4, include descriptive details, जैसे कि people these days are suffering from insomnia. Not that I talk only about my personal experience. Strategy number 5, try to get your listener to feel how you felt about it. All right, वो था आपका talking about a personal experience. चलिए देखते हैं थर्ड सबसेक्शन, describe a scene, जिसका पहला टिप होगा, start with a general statement. जैसे कि आप एक पिक्चर आपके सामने देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है। एक क्लासरूम है, स्टार्ट बाय सेइंग, आई सी अ टिपिकल पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम। इफ यू सी अ पार्क, आई सी अ टिपिकल पार्क वेयर पीपल हैव गैदर्ड टू डू डिफरेंट थिंग्स। Okay, tip number 2, then focus on some details. You don't need to describe everything. Then strategy number 3, build a picture. Tip number 4, use descriptive words and phrases. Descriptive means the teacher, the pupil, or the principal करके आप कह सकते हो। Tip number 5, describe the people's appearances, actions, and feelings. Describe a scene में use prepositions in time like foreground, background, in, on, at, to the right, to the left. ऐसे आप बात करेंगे तो अच्छे स्कोर्स आप ला सकते हैं। Okay, so the fourth subsection on the CELPIP speaking would be making predictions. Use your imagination but be realistic. Your predictions should be related to what you see the people doing. Strategy number 2, ask yourself what actions might the people do next and what feelings might they experience as a result. Strategy number 3, consider the surrounding people and objects in the picture to help you think of ideas. चौथा जो strategy है इसमें, use phrases like most probably, in a while from now, will be, might be, chances are, next, followed by that. So viewers and दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।
तो क्लिक लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. This way I'll be able to come up with more such videos in the future for you. This is Sridhar signing off from CELPIP Academy. See you on the other side. Thanks for watching.